Hello everyone, welcome to this video on English for MH-CET exam. Now if you are thinking of this exam, you probably know the exam pattern also. MH-CET is famous for asking English RCs, and remember, reading comprehension in English of course is not very easy. Generally MH-CET English का level अच्छा होता है. People generally think that it is not, but that's not the case. RC का length भी अच्छा खासा होता है. Usually you see around 450 words passages. तो ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है. Be ready for all kind of questions. Vocab based questions, grammar of course would be there, but in this short video I'm going to talk about reading comprehension of course and how to approach. So please remember one thing everybody, when you are looking at MH-CET reading comprehension, the passages are long but time ज़्यादा होता है नहीं हमारे पास. तो करें क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है. And therefore I strongly advise that you always read the questions first before you look at the passage. Yes, that's very important because that will give you some idea about what to do with the passage. जब आप questions को पहले देख लेते हो तो आपको passage के साथ क्या करना है इसका idea लग जाता है. तो एक बार questions देख लेते हैं. The first question is, which of the following statements is false according to the passage? Now reading the options, please remember, reading the options will not make any difference. Options पढ़ के क्या फायदा, options मत पढ़ो, सिर्फ question को पढ़ लो, so that you keep that in mind when you are looking at the passage. यानी पैसेज को पढ़ते वक्त बस ये ध्यान रखना कि एक फॉल्स वाला क्वेश्चन तो आएगा इससे. सेकेंड इज टाइटल, सूटेबल टाइटल, यानी पूरा पैसेज तो हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना फायदा होगा नहीं. करेक्ट, तो पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द करेक्ट सिनोनिम. ये तो वोकैब का क्वेश्चन है, यानी इफ आई रीड द पैसेज क्विकली तो भी मेरा काम चल जाएगा. I have to read it very fast. I don't have to spend too much time in understanding every single word or line. एक मोटा कहानी समझ आ जाए तो अपना काम हो जाने वाला है. Correct? Now let's go back to the passage. Now let's quickly read it. There are no two opinions on the fact. Now you can pause the video here and read the passage. आप पैसेज को पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, but my suggestion is read it as fast as you can. If you read the passage, you would know what it is about. So I'm going to stop here for some seconds and you read the passage meanwhile. Now I hope you have read the passage. Pause करके passage पढ़ा होगा, नहीं किया तो फिर से pause कर लो, no problem at all, right? Now look at the first question everybody. First question says, which of the following is false according to the passage? Now remember, whenever you are looking for true or false, तो दो तीन बातों का ध्यान रखना. पहली बात तो ये है कि extreme words जहां दिखे, be very careful. Too broad options दिखे, be very careful. Too narrow दिख जाए तो भी ध्यान रखना. And irrelevant या factually incorrect information हो तो भी ध्यान रखना. If you use this, you would be able to eliminate almost all options. Let's start with option 1. Women have progressed in India since independence. बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, but women have progressed in India since independence. मोटा तो ठीक ही है, वैसे फॉल्स भी नहीं कह सकते, बट सारी औरतों ने नहीं किया है. ओनली सम हैव. इनफैक्ट इफ यू रीड द पैसेज, इट सेज women have not been able to really make progress in a lot of fields. They do not have enough representation even as MPs and MLAs. They don't have representation in let's say companies or even in the startup ecology. So women have progressed, yes, but some of them, not all of them. तो ये ऑप्शन इतना ग्रेट तो नहीं लग रहा, फॉल्स हो सकता है. नेक्स्ट, द नेशंस प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन वीमेंस प्रोग्रेस. यस, दिस ऑप्शन इज एक्चुअली मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, है ना, और ये सही बात भी है. तो ये तो पक्का ट्रू है. फर्स्ट वाले पे अभी भी डाउट है अपने को. इंडियन वीमेन हैव टेकन एडवांटेज ऑफ लॉज टू गेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. यस, पैराग्राफ में भी बात मेंशन्ड है
इंडिया में औरतों ने जो लॉज, जिन लॉज ने उनको थोड़ा फ़ायदा पहुंचाया, सपोर्ट किया, उसको यूज़ करके उन्होंने काफ़ी हद तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्राप्त की है. मेक सेंस, दिस लुक्स गुड. ओके, द करंट अप्रोच टू मेजरिंग women's पार्टिसिपेशन इज फॉल्टी. नाउ इफ यू रीड द पैसेज, तो ये इंफॉर्मेशन भी एक्चुअली गिवन है, नॉट इन एग्जैक्टली सेम वर्ड, बट वो कहता है कि जिस तरह से मेजर करते हैं ना कि औरतें कितना पार्टिसिपेट करती हैं, वो सही नहीं है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. फॉल्टी का मतलब इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, विच मीन्स इफ आई लुक एट बी, सी एंड डी, दे आर मेकिंग मोर और लेस करेक्ट सेंस, बट ए इज टू वेग, टू ब्रॉड, बहुत जेनरिक है, कहीं भी फिट हो सकता है. वीमेन हैव प्रोग्रेस्ड इन इंडिया. प्रोग्रेस इन व्हाट सेंस? बिकॉज दे हैव नॉट प्रोग्रेस्ड लॉट इन अ लॉट ऑफ एरियाज, एंड देयरफॉर कौन सा फॉल्स है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है. नाउ इफ यू हैव रेड द पैसेज, तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक आसान है. विच आर द फॉलोइंग will be the most suitable title for the passage? Title बताओ. Now whenever you are solving title questions, याद रखना, all you need to do is you have to find out what is the passage primarily about. बस इतना पता लगाना है कि भाई ये पैसेज का मोटा मोटा मुद्दा क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है, इशू क्या है, किसके बारे में ये बात कर रहा है, क्या बताना चाहता है, और किसके आसपास ये घूम रहा है. All that you need to find out is this: what is this RC all about, what is it trying to figure out, where is it focusing, and things like that. Now let's look at the options. The progress of women since independence, again too vague, right? Correct, but too vague. Is it progress of women or the progress, the amount of progress they have made? Passage is about the progress that women have made is not that great, और होना चाहिए था, कम है, so questionable. Empowering women for national progress, थोड़ा सा वेग है, मे बी वी हैव बेटर चॉइस, बट ठीक है. इट सेज कि विमेन को अगर हम एम्पावर करेंगे तो देश की प्रगति होगी. यस, गुड, बट मे बी वी हैव बेटर ऑप्शन. ब्रेकिंग बैरियर्स, आर विमेन एम्पावर्ड इन इंडिया? नाउ पैसेज इज नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग. पैसेज इज सेइंग दैट औरतों का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा. तो बी ऑप्शन वॉज वेरी वेरी to the point compared to option C. तो option C तो काफ़ी हद तक out है because it's asking a question. The paragraph is not answering a question. Equality and justice for all women all over the world. Too vague, too broad. ये तो सारी औरतों की बात कर रहा है. Now status of all women is important but not from the passage's angle. Primarily passage किसके बारे में है? सारी औरतों के बारे में तो नहीं है. Question का आंसर भी नहीं कर रहा, और progress of women के बारे में है, लेकिन द पॉइंट इज दैट वीमेन हैव नॉट प्रोग्रेस्ड इनफ. अगर उनको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं तो देश भी आगे बढ़ेगा. दैट इज व्हाई द बेस्ट चॉइस वुड बी ऑफ कोर्स ऑप्शन बी. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू एलिमिनेट. एलिमिनेशन पे फोकस करो, सिलेक्शन में मत जाओ. कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता उस पर ध्यान दो. दैट्स अबाउट इट. लास्ट क्वेश्चन वोकैब बेस्ड है. इनमें हमेशा ट्राई करना एलिमिनेट कर सको. इफ यू कांट डू इट, लीव द क्वेश्चन. Which of the following options has the correct synonyms of the word rain as used in the passage? Rain basically means to control something, to restrict something. Rain का synonym ही rain है. Control, yes. Harness, yes. Harness means to make something not go away. जैसे हम horse के ऊपर harness लगा के बैठ जाते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते. Good. But girdle basically means to wrap around something. ये वाला word fit नहीं बैठ रहा. Okay. ब्रिडल का मतलब होता है किसी के ऊपर कंट्रोल करना या हार्नेस लगाना. तो ब्रिडल गुड चॉइस. होल्ड, यस. चेक, यस. टू कंट्रोल, चेक, होल्ड, चेक. फिडल बेसिकली मीन्स टू टैम्पर विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना. नॉट रियली, अगेन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो आउट. रेस्ट्रिक्शन, यस. रेन का मतलब रेस्ट्रिक्शन हो सकता है. ब्रेक, हाँ, ब्रेक लगाना गाड़ियों पे जैसे. कर्ब, रेस्ट्रेंट, ऑल ऑफ दीज आर फिटिंग. वेरी गुड. तो आंसर तो मिल गया, बट आई हैव टू स्टिल चेक द नेक्स्ट ऑप्शन. रेस्ट्रिक्शन, यस. ब्रेक, दिस इज टू ब्रेक समथिंग. कर्ब, रेस्ट्रेंट, oh, so this word again we can use to eliminate, and therefore the correct answer of course is C. So what am I basically saying? If you can focus on elimination, you would be able to do a very good job in MH-CET. Please remember guys, the test is not very easy. Test, it has its own of course set of questions. थोड़ा different ज़रूर है, but मेहनत करें
तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. Now if you have liked the video so far, why not consider giving it a like and spread the word, tell your friends, because we keep on uploading such videos all the time on BYJU'S Exam Prep platform. So make sure you subscribe and press the bell icon so that you can get notifications whenever we put up new videos, which we do every single day all the time. We would love to hear from you. In case you found the session useful, make sure you comment in the comment box and let me know what more can we do for you. किस जगह पे और मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पे तुम्हें गाइडेंस चाहिए, कोई नया वीडियो चाहिए, let us know in the comment box without fail. Go ahead and do that. Thank you so much for joining me here. Thanks and good luck.